चेक चेक वॉइस कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। दिस इज सतीश कुमार दुर्शेट्टी, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। कैसे हो सब लोग? हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है अभी। मेजरमेंट्स का यूट्यूब सीरीज पर गेट 2025 के लिए हम हर दिन ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे। जल्दी से जल्दी जितने लोग लाइव में हैं एक बार तैयार हो जाओ। हम स्टार्ट करेंगे आज एसी ब्रिजेस। ओके, सो एसी ब्रिजेस कल हमने डीसी एंड एसी ब्रिजेस दोनों डिस्कस किया है। कल हमने व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस किया है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद हमने थोड़ा एसी ब्रिजेस भी डिस्कस किया है। उसमें हमने मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज एंड हेस ब्रिज। ओके, अभी रिमेनिंग ब्रिजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार रिकैप करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्या क्या डिस्कस किया है। इफ यू सी, इन द लास्ट क्लास हमने क्या क्या डिस्कस किया है। व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस किया है। उसके बाद हमने, जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा, और ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आपकी तरफ से। जितने लोग लाइव में है, कहाँ से है वो, कहाँ से सेशन को देख रहे हैं, एंड व्हाट वाज योर फीडबैक फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, एक बार मुझे कमेंट्स के रूप में आप पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन वॉच योर कमेंट्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू प्रीवियस क्लासेस, और आपको प्रिपरेशन में कुछ डाउट्स है, चाहे वो गेट इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो आईईएस इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन भी हो, और आपका सेमेस्टर एग्जाम भी हो, जो भी डाउट्स है आप उधर पोस्ट कर सकते हैं। ये सेशन हम हमेशा रात 9 बजे से शॉर्ट करके 10-10:30 तक चलेगा। आपका जनरल डाउट्स भी इधर पोस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज हमने डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग, लेट अस रिकैप द प्रीवियस लेक्चर। These are previous content we have already covered. We have covered the Maxwell inductance bridge, we have covered Maxwell inductance capacitance bridge, we have covered Hayes bridge, we have covered, but Anderson bridge we have not yet covered. Good evening, good evening, good evening. Okay, चलो, now let us move for, एक बार समराइज करेंगे बेटा, समराइज करेंगे एसी ब्रिजेस में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। डीसी ब्रिज, एसी ब्रिज के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो डिस्कस किया हमने। डीसी ब्रिज में डीसी वोल्टेज यूज करते हैं, एसी ब्रिज में हमने एसी वोल्टेज यूज करते हैं। यहाँ डीसी ब्रिज का हमको रेसिस्टेंस है, हमारा एसी ब्रिजेस में इंपिडेंस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ केवल रेसिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में हम यूज कर सकते हैं। जितने लोग लाइव में हैं एक बार मुझे कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। ये इसके बाद हमने डीसी एंड एसी ब्रिज के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो डिस्कस किया है। एंड इसके बाद क्या क्या डिटेक्टर्स यूज कर सकते हैं डीसी ब्रिजेस में, एसी ब्रिजेस में। एसी ब्रिजेस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट डिटेक्टर्स यूज करते हैं। इसका कंटेंट भी मैंने इधर पोस्ट कर दिया आपको। इसके बाद हमने मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में डिस्कस किया है। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज इज ऑलवेज सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। दिस इज आवर टेस्ट कॉइल। टेस्ट कॉइल का इंडक्शन कितना होगा, उसका इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के सेकंड चलो। अब देखेंगे हम मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में हमने क्या क्या डिस्कस किया है।
सो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज हमको टेस्ट कॉइल है, टेस्ट कॉइल का मेजरमेंट्स फाइंड आउट करना है, इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस। सो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज एंड मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज ये दोनों हम डिस्कस किया है। So these two bridges are suitable for measurement of self inductance of a coil. In Maxwell inductance we are going to measure by comparing with inductance, by comparing with capacitance. Next इसके बाद Hayes bridge हमने डिस्कस किया है। Hayes bridge is all about for measurement of self inductance of a coil whose Q factor is very greater than 10. चलो आज हम डिस्कस करेंगे एंडरसन ब्रिज। आज हम डिस्कस करेंगे एंडरसन ब्रिज, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ब्रिजेस है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड ब्रिजेस है। उसका हम बोलते हैं 5 पॉइंट ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ब्रिज को ध्यान से देखें तो ए बी सी डी ई 5 पॉइंट है। सो इट इज सुटेबल फॉर सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट, एल मेजरमेंट बाय फिक्स्ड कैपेसिटेंस। इट इज नॉट ए वेरिएबल कैपेसिटेंस, इट इज ए फिक्स्ड कैपेसिटेंस। यह कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ब्रिज का कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, क्योंकि 5 आर्म्स में हमको ब्रिज देख रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक्यूरेट मेजरमेंट है। One of the key features of Anderson bridge is it is suitable for accurate measurement of the inductance of a coil, and it is mostly suitable for self-inductance of the coils whose Q factor is less than 1. So आप ये important point है, Maxwell bridge suitable for Q factor medium type, and Hayes bridge is suitable for Q factor greater than 10, and Anderson bridge is suitable for self-inductance measurement of coils whose Q factor is less than 1. Okay, my dear? So try to understand these points. Okay? Chalo, let us move for the next. I am not discussing much about how to solve the bridge. Gate के लिए इतना important नहीं है, आप आराम से solve कर सकते हैं। सिंपल आपको कुछ नेटवर्क्स का नॉलेज है तो ये पर्टिकुलर डेल्टा है ना, ये डेल्टा को स्टार मॉडल में कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं। सो that is the delta to star model. So I have taken this as x, this as y, and this as z. So x is nothing but r into r4 by total, y is nothing but r into 1 by j omega c by total, z is nothing but r4 into c. So this is derivation part. अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x का वैल्यू आ चुका है, एंड नेक्स्ट y का वैल्यू आ चुका है, नेक्स्ट z का वैल्यू भी आ चुका है। ओके, सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स x y z। अगर ये 3 पैरामीटर्स ने हमको सब्स्टिट्यूट करे तो एंडरसन ब्रिज का विधि विधान ऐसा होगा। तो ये है हमारा x y z। ओके, सो दिस वन हमारा x y z है। ओके, सो इफ यू यूज दिस कॉन्सेप्ट, सो दिस इज आवर डिटेक्टर। सो ये है हमारा मेजरमेंट। सो अभी सॉल्व करने से हमको क्या आएगा, some complication parameters आएगा। So this is our R1 unknown resistance, and this is our L1. So if you see the L1, it is dependent on the fixed C. Yes, अगर आपके पास fixed capacitance है, measurement करना आसान होगा। Okay, so this capacitance is at the center of the bridge. So the center of the bridge means shielding is very, very difficult there. Okay, okay, chalo. So let us see now the questions related to some points, and of course at the same time I want to discuss, after Anderson I want to discuss some more bridges. Yeah, good evening. Yes, sorry.
Arif Khan good, Sania Das good evening, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 मिस किया, आप आराम से वहाँ देख सकते हैं, वह प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, नो वरी. Okay, so you can go through the previous lectures. Okay, you can go through that. So एंडरसन के ब्रिज क्या क्या ब्रिजेस है? ओवेंस ब्रिज है, वीन्स ब्रिज है, डिसाटी ब्रिज है, शेरिंग ब्रिज है. So I am covering in a glimpse. I want to cover all the topics. That's why I collected this slide from our paid class. So if you see here, so this is our Owens bridge. So this is the Owens bridge, my dear. So the fundamental features of Owens bridge is it is suitable for self-inductance measurement. It is suitable for self-inductance measurement. And the important point here is it is incremental and decremental purpose. That means the self-inductors which are increasing in a millihenry or decreasing in a microhenry, in that case we can use this particular bridge, my dear. So it is only one inductance bridge which has two capacitors. So here C2 and C4. There is not compulsory to by heart the bridges. Okay, so gate के लिए चलो. So if you see here, this is the L1 and the key points of this is, so we are going to get the Q factor as omega R to C2. The key points that you have to remember here is it is suitable for incremental and decremental measurements. The next comes the Wien's bridge. Okay, so Wien's bridge is basically, as the name indicates, it is suitable for the frequency measurement. So if you see the Wien's bridge diagram here, there is one resistor and capacitor in parallel, and this resistor capacitor in series, and there is a mechanical switch. By adjusting this switch, okay, by adjusting this switch, we can make the frequency selection of the particular bridge. Okay, this is what we call as mechanical coupling. So here resistor and capacitor both are parallel, so yaha R1 parallel to C1 and resistor and capacitor series, second picture. Okay, so now if you make simplification and finally if you see, what I am going to get is this is the expression. Frequency I am going to get as 1 by 2 pi r. This all information you can get from my notes, not a big issue. So you just go through the slides. Okay, I don't want to derive, because the 1 hour session I don't want to waste the time by deriving each and every step. Okay, so Wien's bridge is suitable for frequency measurement. Okay, so next, before going to the Dissipation bridge and Schering bridge, what is the capacitor? What is the dissipation factor? So if you see, generally for an ideal capacitor, generally this is the ideal capacitor. For an ideal capacitor, so it is called pure capacitor. The pure capacitor is nothing but a lossless capacitor. Okay, so the dielectric loss is 0. So the current passing through this capacitor is IC and the voltage across the capacitor is VC. For a pure capacitor, we know I is equal to V into dV by dt. So the voltage and the current particularly 90 degrees, because for a capacitor the current and voltage के बीच में perfectly 90 degrees phase shift है. So for a pure capacitor, the dielectric power loss is given by expression VI cos phi. Okay, so VI cos phi. So whereas this cos phi is the angle between the voltage component and current component, and there is 90 degrees, so it comes as 0. So this is the dielectric power loss. हम उसको क्या बोलते हैं? Dielectric power loss बोलते हैं. Okay, so next comes the practical analysis. If you see the practically we cannot see the lossless capacitor. Now we can use only the lossy capacitor. So the lossy capacitor means it contains a resistor in series. Okay, very good. Henry, thank you. Okay, yeah, so you should understand the fundamental difference between the pure capacitor and practical capacitor. In pure capacitor the dielectric loss is 0, in practical capacitor dielectric loss exists. So if you see, this is a practical capacitor, this is C and R, the voltage across the capacitor VC, the voltage across the resistor VR. Okay, and if you see now, generally for an ideal capacitor current leads and the voltage lags. Okay, so
because as per this expression you can remember current is equal to Vc to dV by dt. Current leads and the voltage lags by 90 degrees. That is ideal, but practically speaking there is no pure capacitor in the real picture. There exists an internal resistance VR component, so that's why the Vc cannot be coming here, the Vc will be coming here. So if you see this loss angle as delta, so then this will become 90 minus delta. So if this is the VR component, why? Because current passing through resistor, the voltage across the capacitor will be having an angle of 90 minus delta, but the voltage across the resistor will be having an in phase relationship with the in phase relation with this in phase relation with the resistor. In a resistor the voltage and current both will be in phase. Okay, now this is VR. So if you see now the tan delta, so what is the tan delta? The tan delta is nothing but VR by Vc. So VR is nothing but the voltage component across resistor that I can take it as IC into R. So this is IC into R. So what is the voltage across a capacitor? That is IC into XC. So the IC gets cancelled here. So what I am going to get is R by XC, that is 1 by omega C. So tan delta is equal to omega CR. So this tan delta is called as dissipation factor. Okay, so Q factor is different, dissipation factor is different. Q factor is a figure of merit, dissipation factor is a figure of demerit. Q factor talks about the ability of the component to storage the energy, okay, whether it is an inductor or capacitor. But whereas the dissipation factor, it is the situation how much energy it is going to dissipate. Okay, it's a figure of demerit. Q factor is a figure of merit, dissipation factor is a figure of demerit. ये mind में रखना है. Okay my dear, चलो. Sir, I want to crack GATE with under 1000 rank, please guide me. Nothing is there to guide यार, you have to work hard. Okay, आपके पास बहुत सारा content available है. अगर आपका पेड बैच स्टूडेंट हो और फ्री बैच स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट हो, आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है. So when the content is properly available, no need to ask for the guidance. The only thing is you have to keep on tracking, keep on tracking, keep on tracking. I am second year diploma student. I have 4 years for preparation. Yes, that is enough time you are having. So if you have enough time now, you have to plan the time. Okay, so please divide the time. The best strategy to get success in the life is you have to divide the time. You have to divide the time for 25%, like 25 minutes, 25 days, 25 months. This is the way you have to plan for the life. For example, this day I want to do something. So today if I want to complete one particular topic, okay, so you have to divide that particular day into 25 minutes, 20 minutes or 25 minutes, like that. You have to divide the entire day as 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes. So वो 25 मिनट्स तक आप एक टॉपिक को चूज करना है, वो टॉपिक कंप्लीट करना है बस. वो 25 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट्स का ब्रेक दे सकते हैं और 10 मिनट्स का ब्रेक दे सकते हैं, 15 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं, कुछ भी नहीं. लेकिन 25 मिनट तक आप एक टॉपिक फिक्स करो, वो टॉपिक खत्म कर दो. So that's the way. The more pieces you make a day, the more pieces you make a month, the more pieces you make a year, definitely the efficiency of study will increase. I will practice my entire day like that. I will fix 25 minutes for my morning works, next to 25 minutes for yoga, next to 25 minutes for meditation, next 25 minutes for my stock market, next to 25 minutes for my study, fixing the things, and next 25 minutes. Like that I will go on dividing my entire day. At the end of the day, whatever the important things, all will be covered. Okay, so this is the point you have to understand, my dear. So this consistency and discipline guidance आप कोई भी नहीं दे सकते. You cannot get this consistency and guidance from external things. You have to practice on your own. You have to go as per your, build a room, a cabin for yourself, sit there, arrange the scenarios, arrange the facilities, arrange the resources, so that आपका time save हो जाएगा. Okay, so you are the master for your life. So no guidance from the others. You are the creator of your own life. Okay, try to understand. Very good, Henry. So then you practice the PYQs, gate PYQs fix कर लो. Okay ना? चल. So practical capacitor में हमको dielectric loss exist करता है. So for a practical capacitor, the dielectric power loss is this. So power, I can take power P is equal to V
Have you noted? Yeah, this is the scenario. Please try to make a note of this point. So dissipation factor. तो ये डिसिपेशन फैक्टर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो ब्रिड्जेस है, एक है डिसॉटी ब्रिड्ज और एक है शेरिंग ब्रिड्ज। क्यू फैक्टर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिड्ज है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिड्ज है, एंडरसन ब्रिड्ज है, हेस ब्रिड्ज है, ओवेंस ब्रिड्ज है। लेकिन डिसिपेशन फैक्टर इज अ पैरामीटर रिलेटेड टू कैपेसिटेंस, सो उसके लिए हमारे पास दो ब्रिड्जेस है, एक डिसॉटी ब्रिड्ज है, एक शेरिंग ब्रिड्ज है। So if you see the Dissipation bridge, my dear, this is a Dissipation bridge. So Dissipation bridge is basically for pure capacitor. Dissipation bridge is very simple, double everything. D बोलो तो double. अब ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं, D बोलो तो double capacitors, double resistors. Simple. This is very simplest. C1, C2 and R3, R4 ऐसा है. So this is our lossless capacitor. So C1 value identify करना है. So but इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपको C1 का वैल्यू चाहिए then definitely you need to know C2 value. That is a point here. So that's why I am going for modified Dissipation bridge. In modified Dissipation bridge कैपेसिटर के साथ साथ प्रैक्टिकल कैपेसिटर की पिक्चर लेते हैं। प्रीवियसली भी हमने आइडियल कैपेसिटर लिया है। आइडियल कैपेसिटर में रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल कैपेसिटर में आपके पास रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। सो लॉसी कैपेसिटर है। सो प्रीवियसली दिस वाज ए लॉसलेस कैपेसिटर। Okay, so try to understand this was a lossless capacitor, whereas this one is a lossy capacitor. Lossy capacitor means it is having some resistance component. So C1 in series with R1, C2 in series with R2. So उसको डेरिवेशन कर लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, ये स्टेप्स आप देख सकते हैं, नोट्स पे लिख सकते हैं। ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद इतना मेहनत करके मैंने पेड क्लासेस में कर दिया, वो पूरा कंटेंट आपको प्री क्लासेस में दे रहा हूँ। Okay, that's why I'm not spending my time now to derive the expression. आप स्लाइड्स देख सकते हैं आराम से। So when you derive all those things, finally हमको ये एक्सप्रेशन आएगा, R4/R3 is equal to this एक्सप्रेशन आएगा। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये पैरामीटर आएगा डिसिपेशन फैक्टर 1 माइनस डिसिपेशन फैक्टर 2, वाई बिकॉज ओमेगा C1 R1 ओमेगा C2 R2 आएगा। सो डिसिपेशन फैक्टर 1 माइनस डिसिपेशन फैक्टर। द प्रॉब्लम विद दिस मॉडिफाइड Dissipation ब्रिज इज, अगर आपको ये एक डिसिपेशन फैक्टर फाइंड आउट करना, एक कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर को फाइंड आउट करना बोले तो और एक कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर, सेमेस्टर एग्जाम की वजह से टाइम कम मिल रहा है सर प्रिपरेशन का। यस, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर दी college goers, and I suggest for the college goers, as long as you are in the college, you have to balance your semester exams and the campus placement and gate also. Okay, so my sincere request, जितने लोग लाइव क्लास में हैं, जितने लोग लाइव में देख रहे हैं, उन बच्चों में अगर कॉलेज गोयर्स है, कॉलेज सेमेस्टर लोग हैं, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप फर्स्ट प्रेफरेंस कैंपस प्लेसमेंट के दीजिए। ओके, सो वाई बिकॉज अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशंस कैसा आएगा हमको पता नहीं है, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसा होगा कुछ भी पता नहीं है। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमको अच्छा सैलरीज मिल रहे हैं। सो द अपॉर्चुनिटी दैट यू आर हैविंग व्हेन यू आर इन द कॉलेज इज योर कॉलेज विल बी हैविंग सम कैंपस प्लेसमेंट्स। So please use those campus placement as a great opportunity. एक बार कॉलेज लाइफ होने के बाद आपको कैंपस प्लेसमेंट की चांस ही नहीं मिलेगा। So that's the point I want to suggest, my dear. Okay. So once the college is over, automatically you are left over with only the government job opportunities. So that's why I suggest when you are in the college, my dear students, please focus on the campus placement. I suggest everybody has to enter a good campus placement. Okay. So गेट का प्रिपरेशन चलता रहेगा, लेकिन बट व्हेन यू आर इन द कॉलेज प्लीज गिव प्रेफरेंस टू कैंपस प्लेसमेंट आल्सो। ओके, सो दैट इज माय सजेशन। सो द प्रॉब्लम विद द Dissipation ब्रिज इज, Dissipation ब्रिज में अगर आपको यूज करें तो क्या होगा, मॉडिफाइड Dissipation ब्रिज में अगर आपको एक डिसिपेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है, उसके लिए और एक डिसिपेशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगा। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर शेयरिंग ब्रिज। सो Dissipation ब्रिज में और एक बात है, डी बोलो तो डबल, डी बोलो तो डाउट। ओके, क्योंकि हमको एक्यूरेट डिसिपेशन फैक्टर नहीं मिला ना, एक डिसिपेशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपने और एक डिसिपेशन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करने की जरूरत पड़ी है। सो दैट्स व्हाई उसको हमने डाउटफुल ब्रिज बोलते हैं। Dissipation बोलो तो डाउट। ओके ना, सो डिसिपेशन फैक्टर डाउटफुल है, हमको सच डिसिपेशन फैक्टर कहाँ मिलेगा, शेयरिंग ब्रिज में आ रहेगा। शेयरिंग ब्रिज का फर्स्ट टू लेटर्स है सच। ओके, सच SCH बोलो तो सच। सो आपको ट्रू डिसिपेशन फैक्टर कहाँ मिलेगा, शेयरिंग ब्रिज में मिलेगा। Dissipation ब्रिज में नहीं मिलेगा, क्योंकि Dissipation बोलो तो डी बोलो तो डाउट, क्योंकि एक डिसिपेशन फैक्टर के लिए आपने और एक डिसिपेशन फैक्टर पर डिपेंडेंट करना पड़ेगा।
ओके, सो दिस द शेयरिंग ब्रिज माय डियर, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन इधर आपको 2-3 कैपेसिटर्स आएगा, ये C1 है, ये C2 है, C4R4 है. सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द ब्रिजेस, आई नो दैट. सेमेस्टर एग्जाम के आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, आप मेहनत करके बाय हार्ट करके वो प्रैक्टिस करके. चलिए, बाहर का मौसम खराब है, थोड़ा सा स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे. ओके ओके, चलो, नाउ लेट अस सी इफ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर शेयरिंग ब्रिज. हमको डिसिपेशन फैक्टर, सच का डिसिपेशन फैक्टर आएगा, सिंगल डिसिपेशन फैक्टर, नो नीड टू डिपेंड ऑन द अदर्स. डिसिपेशन फैक्टर ओमेगा और फोर्स. सो टोटली हमने डिस्कस किया है मैक्सवेल ब्रिजेस, हेस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, वीन्स ब्रिज, डिसाटी ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज. ओके, चलो, नाउ लेट अस गो फॉर सम क्वेश्चंस. हम क्वेश्चंस के पास जाएंगे. What is the answer for this question? ISC Bangalore 2002 का सवाल है. Okay, so please try to answer this question, my dear. जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करो. आंसर बताइए बेटा. क्या कोई आंसर नहीं दे रहे, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं. क्या आंसर है इसका? सो वीन्स ब्रिज है बेटा, वीन्स. सो आई एम टेलिंग यू द शॉर्टकट. वीन, वीन्स में W है. W बोलो तो आप ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं, 2πf. सो F बोलो तो फ्रीक्वेंसी. सो दिस द ट्रिक माय डियर, आई एम गिविंग यू दिस एज अ ट्रिक. प्लीज नोट डाउन दिस ट्रिक. Okay, so the right answer is frequency measurement, option A है. Next, can anybody answer this question? इसका आंसर क्या है? Please try to answer the questions यार. Please make the session as interactive. इसका आंसर जल्दी बताइए. मैं ट्रिक्स यूज कर रहा हूं आपके लिए, तो आप ट्रिक्स को देख के बताइए आपको क्या क्या लगेगा. The bridge most suited for the measurement of a 4 terminal resistance in the range of 0.001 ohm to 0.1 ohm is dash. 0.001 ohm to 0.1 ohm is dash. Wien's bridge, Kelvin's double bridge, Maxwell's bridge, Schering bridge. So definitely this is a low resistance. So Kelvin's double bridge is for low resistance measurement. So this is for answer. The right answer here is the low resistance measurement. Low resistance measurement. So the right answer here is option B है. चलो,
Try to answer this question. What is the answer for this question? जितने लोग लाइव में हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. आईआईटी दिल्ली 2012 का सवाल है. आईआईटी दिल्ली 2012 का सवाल है. The bridge method commonly used for finding the mutual inductance. So if you see here, Wien's bridge is for what? Wien's bridge is for frequency measurement. Wien's bridge is for frequency measurement. Sauty bridge is for चलो, let us go for one more question. Many times हमको एग्जाम में match the following questions came in the GATE exam. Match the following questions came. Try to answer this question. Match the measured variables with the bridge. Left side he has given self-inductance, capacitance, mutual inductance, frequency. राइट साइड ही हैज गिवन एंडरसन, वीन, रॉबिन्सन, कैम्बेल एंड शेरिंग, ये साइंटिस्ट का नाम से. सो सेल्फ इंडक्टेंस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दिस. सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस just now discussed, that is a Campbell. Next, frequency is for Wien. Frequency goes for Wien. And self inductance is Anderson. Next, capacitance goes to Schering. So A goes to S, B goes to, sorry, A goes to P, B goes to S, C goes to R, and D goes to Q. So A goes to P, B goes to S. So the right answer is option B is the right answer. Option B will be the right answer. Chalo. Try to answer this question. छह लोग देख रहे, 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, जितने लोग सेशन को देख रहे, मुझे एक बार आंसर कर दीजिए बेटा. क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो. आई नीड द आंसर्स फ्रॉम यू. जो कंटेंट मैं दे रहा हूं उसका आंसर्स बोलना चाहिए. Low value of R, high value of Q, inductance L, capacitance C. So how to, right side he has given Schering bridge, Maxwell's Wien's bridge, Kelvin's double bridge, Hayes bridge. So first of all, high value of Q. High value of Q means Hayes bridge. So that is yes, Hayes bridge. Inductance, self-inductance, capacitance. Inductance means that is low value of R, yes, that is Kelvin bridge. Next, capacitance C and inductance, capacitance Schering bridge. So this goes to Schering bridge. Okay, and inductance L, that is this one.
So 1 goes to R, 1 goes to R, and 2 goes to S, 4 goes to P, 2 goes to 3. So option A is the right answer. Okay, next. Try to answer this question. Match the following. देखो कितने बार हमको question match the following आ गया exam में. How many times these concepts were asked in the exam? Resistance in the milliohm range, low values of capacitance, comparison of resistance which are nearly equal, inductance of a coil with a large time constant. Group 2, Wheatstone bridge, Kelvin double bridge, Schering bridge, Wien's bridge, Hayes bridge, Carey-Foster bridge. Okay, so what to do now? So if you see here, resistance in the milliohm range, that is Kelvin double bridge. So P goes to 2. Next, P goes to 2. Low values of capacitance. Capacitance के लिए कोई other bridge नहीं है. Schering bridge is option. So that's it. Next, comparison of resistance which are nearly equal. It's almost like Carey-Foster bridge. Carey-Foster bridge is also a resistance measurement. Inductance of a coil with a large time constant. Large time constant means tau. Tau is equal to L by R. Very interesting this concept. Tau is more, tau is L by R is more, tau is more means Q omega L by R is also more. So he is indirectly asking the bridge which is suitable for the higher Q factor measurements. So that is nothing but Hayes bridge. S goes to very good knowledge. So S goes to 5. So option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, my dear. So these are the match the following questions. Every time we got the match the following, so different. Now try to answer this one. How many times this match the following can please go through? Many times this match the following was asked on the bridges. चलो Wien bridge again. See, आपको practice होना जरूरत है. आपको यही JEE exams लिख रहे. Suppose in future if you are going to write SSC JEE exams, then definitely a questions use होगा. Wien bridge, measurement of frequency तक रहेगा. Next, Maxwell bridge, Schering bridge. Schering bridge measurement of resistance नहीं है, Q inductors नहीं है. High voltage capacitors, yes, this is related to capacitors. Next, Anderson bridge. Anderson bridge is for lower Q factors. Okay, next,
Maxwell bridge is also for inductance measurement, so compared to this it is high only, so Q. Next, Boltzmann's bridge is electrostatic field, so E goes to U, D goes to T, C goes to S, B goes to Q, A goes to R. So the right answer is option A. देखो इतना number of times I am giving you these concepts, so just to give an idea how many times हमको questions आ चुका है. Henry, are you there? Arif Khan, are you there? Sania Das, are you there? How many times हमको match the following questions आ गया, इसमें आपको दिख रहा है. So last one, try to answer this. जल्दी बताओ बेटा, इसका आंसर क्या हो सकता है? केल्विन्स डबल ब्रिज इज फॉर लो रेसिस्टेंस, सिंपल की बात है, लो रेसिस्टेंस. वीन्स ब्रिज इज फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, शेयरिंग ब्रिज इज फॉर कैपेसिटेंस मेजरमेंट, डिएक्सल ब्रिज इज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस. आपको प्रैक्टिस होना पड़ेगा. ओके, सो केल्विन डबल ब्रिज, P goes to 4, Q goes to 3, R goes to 1, S goes to 2. So okay na, so enough for today. Is it enough? तो आपके लिए बस है. तो द नेक्स्ट सेशंस, कल हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे PMMC, मूविंग आयरन, डायनामोमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर. ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स मेजर है. PMMC, मूविंग आयरन, डायनामोमीटर, डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर, एनर्जी मीटर. ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स 2 सेशंस में मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ. 2 और 3 सेशंस होगा. तो ट्राई टू कम फॉर टुमारोज क्लास, इट विल बी मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास. हम ज़्यादा थियरेटिकल डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड्स के फॉर्म में, मैक्सिमम कंटेंट स्लाइड्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि यूट्यूब सेशन है, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम. सो मैक्सिमम बेनिफिट होने के लिए मैंने ऑलरेडी डिजाइन स्लाइड्स है, वो स्लाइड्स यूज करके डायरेक्टली हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जाएंगे. ओके, सो टुमारो विल मीट विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. थैंक यू.